July, I think coming. So 14th July is the Bastille incident. उसके रीजंस को आज डिस्कस के रीजंस याद बड़े थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने पहले बता दिया before I read these lines. So Bastille was in 14th July. So जिसके अंदर पेरिस के अंदर ये बास्टिल क्या एक किला है जो कि सियासी ताकत का सेंटर है, उनकी पावर को सिंबलाइज करता है. तो इसको जब उन्होंने स्टॉर्म किया, यहाँ पे जब इसको फायर किया, आग लगाई गई, तो हुकूमत की जो ताकत का सिंबल था उसको उन्होंने चैलेंज किया. Revolutionary third state ने challenge किया. So before that it was a great fear, which we covered already. The month of July was a period of great fear. उस जुलाई के months के अंदर भी बास्टिल का incident. Great fear was what? A period of panic in France by the peasants and the lower middle class and the poor factions of society. Why the fear was there? Why this chaos was there? Aristocracy conspired there here. वो चाहते हैं कि वो जो नेशनल असेंबली थर्ड स्टेट जो अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर चुकी है वो डिसॉल्व कर दी जाए. तो ये था ग्रेट फेयर. क्योंकि क्वेश्चन ये भी आया कि हाउ आइडियाज एंड फेयर, हाउ दीज टू फैक्टर्स लेड टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन. नाउ यू हैव टू लिंक द फेयर फैक्टर एज वेल. Fear and ideas of the philosophers. How the ideas of the philosophers and the fear, how these two factors led towards the revolution. And the fear was the period of fear, but even before that there was a fear. And that fear was जब वो tax reforms करना चाहते थे तो दो options थे. Aristocracy, clergy, tax जो privileges को forfeit कर दे या फिर वो third estate पे tax लगा. लेकिन third estate के बट they feared that they would resist against that. Third estate पे tax क्यों नहीं लगा रहे थे खुद से? Because they feared the third estate would react against that. And because of that reaction, they went for the European banks. But when they refused, European banks ने नहीं कर किया, तो फिर वो Assembly of Notables के सेशन को कॉल किया गया कि clergy, aristocracy कुछ help करे हमें, या तो वो अपनी पर्सनल प्रिविलेजेस अनाउंस कर दे, या फिर थर्ड स्टेट के ऊपर ये हमें टैक्स लगाने दे और ये उसको बैक करे, फिर ये हमारे साथ खड़े. लेकिन वो भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे. फिर ये स्टेट जनरल का सेशन कॉल कर जाएगा. So again, the fear was like we have to link it कहीं ना कहीं से चीजें we have to link one. क्योंकि फिर एक पॉइंट के ऊपर तो fear हम उसको बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे. So the fear and the ideas तो हम बहुत ज़्यादा अगर जो करें we can write majority of the arguments over that. Then how ideas and the fear led towards that. And again, the fear was there when they locked the members of the third estate. तभी there was the fear. The fear was countryside में कोई में मजा था. यानी कि जब थर्ड स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया जून के अंदर, the government should have used force against them. ऐसा नहीं होता कि कोई भी उठ गया कि थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली हमें बाकी खत्म कर दिया. The king should have used force. But aristocracy, clergy, they were forcing, they were imploring folks जो है pray कर रहे थे कि आप ताकत का इस्तेमाल करें, इनको recognize नहीं करें. Clergy, aristocracy repeatedly trying to persuade the king to use force against the national assembly, against the members of the national assembly, और दोबारा से आप जो absolutist monarchy है उसकी ताकत को restore करें, use of force करें. But king was reluctant because again he feared that overall society में गिराव हो जाए. So how the fear and then the ideas bring rational ideas में मतलब सारे philosophers के ideas ही रहेंगे ना. मतलब थर्ड स्टेट के ideas तो हम फेयर के अंदर डिस्कस करेंगे. फेयर के अंदर फेयर वाले पॉइंट्स आप पिक एंड चूज करेंगे अलग-अलग यहाँ से अलग पॉइंट्स. पॉलिटिकल फेयर क्या था, इकोनॉमिकली फेयर क्या था, जब इंसिडेंट्स हुए तो उसके ऊपर फेयर फैक्टर क्या था. ग्रेट फेयर का टाइम पीरियड है उसको आप डिस्कस करके तो फेयर के ऊपर 3-4 पॉइंट्स बन जाएंगे, 1.5 पेज हो जाएगा. बाकी ओवरऑल आइडियाज है नहीं कर. So Bastille incident, great fear create हुआ because aristocracy conspired against the National Assembly of France, जिसको बादशाह recognize कर चुके हैं. And there was like anarchy inside France, interior France changed, and then this incident occurred. The Bastille incident in July 1789. 1789 Bastille incident. And the third estate का लोअर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट है, इनके गरीब तबका, उनका बूर्जुआ क्लास थी, ये स्टॉर्म करेंगे बास्टिल के फोर्ट को.
Reasons क्या थी? There were various reasons for that. Number one is that King plan कर रहा है वो National Assembly को dissolve करने जा रहा है, forces concentrate कर रहा था तो dissolve National Assembly. Food shortages थी तो ये कहा गया कि मार्क्सटीन में ढेर सारा अनाज जो है वो स्टोर है तो फूड को मिल जाएगा. Critical prisoners को लाद के मारा need of farms was another reason. And the major reason was the dismissal of J.K. Sneaker. J.K. Sneaker was a financial advisor of Louis XVI. And it was J.K. Sneaker who proposed the king, who encouraged, who persuaded Louis XVI to call the East States General. J.K. Sneaker के कहने पे East States General का सेशन बहुत हुआ था May 1789. एक हमने देखा कि अरिस्टोक्रेसी क्लर्जी ने कहा कि आपने टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे तो ईस्ट स्टेट जनरल के प्लेटफॉर्म से आप उन रिफॉर्म्स को ट्रिगर करवाएं. एंड सेकंड इट वाज J.K. Sneaker. I intentionally left that point क्योंकि मैंने यहाँ कवर करना था. तो J.K. Sneaker ने encourage किया बादशाह को कि आप क्योंकि आप टैक्स रिफॉर्म्स तो करनी थी, फिर अलेक्जेंडर डिक्लॉन की सजेशन को रिजेक्ट कर दी गई. तो J.K. Sneaker encouraged the king to call East States General क्योंकि डिमांड थी अरिस्टोक्रेसी की. तो इसके से कहने पे ईस्ट स्टेट जनरल का सेशन कॉल कर दिया गया मई के अंदर. पूरा मई जून नेक्स्ट मंथ जो मंथ था उसमें डेडलॉक क्रिएट हो गई. एंड देन थर्ड ईस्ट स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस. और उनकी डिमांड्स आ गई थर्ड ईस्ट स्टेट की यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, वोटिंग रिप्रेजेंटेशन, और फिर तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. और फिर किंग एक्सेप्टेड दोज डिमांड्स. King recognized third East State as the National Assembly of France. And who persuaded them? J.K. Sneaker. It was J.K. Sneaker who sided with the third East State and when third East State declared itself the National Assembly of France. So J.K. Sneaker ने basically sympathize किया third East State के साथ. जब third East State अपने आप को National Assembly declare कर दिया तो J.K. Sneaker third East State को sympathize करता उनके साथ खड़ा होता है. तो वो बादशाह को कन्विंस करता है कि आप थर्ड स्टेट को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. उस टाइम पॉलिटिकली देखा जाए तो मैंने गुड डिसीजन किया पहले स्टेट जनरल को कॉल कराई क्योंकि वो कॉल कराना भी तकरीबन 100 साल के बाद के आसपास तो बाद वही कॉल हो गई थी. तो फिर वहाँ पे डिमांड शुरू में ये नहीं था कि डायरेक्ट रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जब डिमांडिंग था रिफॉर्म. फिर देन जब उन्होंने नेशनल असेंबली वो की ओथ किया तो देन अगेन बादशाह को उसके लिए परसुएड करना दैट वाज गुड ऑप्शन. आप थोड़ा बहुत सिंपैथाइज करें ताकि मामला जो है हाल हो वो हम इस रिफॉर्म्स को आगे लेके चले. और अभी देखें वो अभी वायलेंस नहीं शुरू हुआ. यस सर. थर्ड स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर चुकी है, कोई कत्ल वारदात नहीं हुई, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, रियासत ने भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने भी कोई वायलेंस नहीं किया. तो इनकलाब आ चुका है लेकिन इट्स लाइक ब्लडलेस इन द बिगिनिंग फेज. आगे चल के होगा बट इन द बिगिनिंग टाइम पीरियड थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है, रियासत भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती, थर्ड स्टेट के मेंबर्स भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते. थर्ड जब 17th June थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस. Stannis Ford also by 20th June. And it was after that in the month of July particularly a great fear occurred in France. And when there were rumors that the king is dissolving the National Assembly of France, तब थर्ड स्टेट का रिवोल्ट करे. उनके मेंबर्स particularly गरीब तबका जो था वो अपने feudal lords and aristocracy clergy के खिलाफ रिवोल्ट करेगा. तब वायलेंस जो है वो एनार्की जो है फ्रांस में शुरू करेगी. और जब थर्ड स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है तो वायलेंस नहीं. और दूसरी बात बादशाह को इज्जत दी गई है. ऐसा नहीं था कि बादशाह को गालियां निकालना शुरू कर दिया. फ्रांस moved towards a constitutional monarchy. Still King was recognized as their ruler. ऐसा नहीं था कि अब वो बादशाह उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, उसको मोनार्क रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे. नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी उसको अपना बादशाह मानते थे, वो उसके खिलाफ नहीं थे. It would be later on जब उसके खिलाफ वो होना शुरू हुआ. इसका प्रेसिडेंट ब्रिटिश में भी था ना कि दे आल्सो वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 4-5 साल पहले 100 years back, 1688, glorious revolution. So that the president was already there 100 years back. England became a constitutional monarchy, glorious revolution. So sort of that structure was there. Third state declared itself the National Assembly of France, but still King was there. The monarch was still there, King, and there was then chaos and bloodshed in France. So J.K. Sneaker का जो dismissal था, that also added fuel to the fire, and the people then voted against
the regime against establishment कि भाई तो वो हमारे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने जा रहे हैं और फिर जब बादशाह के स्नेकर को डिसमिस करता है जो कि सिंपलाइज जिसने किया था विद द थर्ड स्टेट because he played the political role इसहाक डार का रोल जो था ना he played the role of इसहाक डार कि कैसे manipulate किया जाए political decision making के लिए so he was like that sort of figure तो जब इसको रिमूव किया गया then third state they reacted against that and the Bastille incident was there. And already the period of great fear was happening and during that this particular incident occurred. July 14 July 1789. The next day 14th July को जो नेशनल असेंबली थी थर्ड स्टेट जो यहाँ पर नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर चुकी थी वो नेशनल गार्ड क्रिएट कर एक तरह की अपनी आर्मी क्रिएट करेंगे थर्ड स्टेट के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की अपनी फोर्स क्रिएट करेंगे अपना नेशनल गार्ड क्रिएट करेंगे बिकॉज़ पहले तो इट वाज अंडर द कमांड लीडरशिप ऑफ लुई 16 मिलिट्री वाज विद लुई 16 so they created this national guard under the leadership of Lafayette वो जो अमेरिका में गया वो जो जॉर्ज वाशिंगटन के साथ लड़ा तो Lafayette would be the key figure जो कि ऑर्गेनाइज करेगा और वो इस नेशनल गार्ड को लीड करेगा और नेशनल गार्ड प्रोटेक्ट करेगा नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस के मेंबर्स को बिकॉज़ अब हुकूमत तो इनकी अलोंगसाइड दैट द किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड स्टिल एज अ मोनार्क ऑफ फ्रांस अभी वो ऐसा नहीं था कि वो मोनार्क नहीं था एंड देन फ्यूडलिज्म वाज अबॉलिश्ड इन अगस्त जुलाई में बास्टील हुआ अगस्त के अंदर फ्रांस के अंदर फ्यूडलिज्म को भी अबॉलिश कर दिया और ये पहले हमें समझ लिया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जैसे ही फ्यूडलिज्म को खत्म किया गया तो वो जो मिडिल क्लास थी उसको एक्सेस मिली जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री के अंदर ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल एंड राइट टू हाई ऑफिसेज ड्यू टू मैरिज ये अलाउ हुआ यहाँ क्योंकि पहले तो ये था कि जब फ्यूडल निजाम था तो जो फ्यूडल तबका था जो अरिस्टोक्रेसी की मिलिट्री थी वही मिलिट्री की टॉप लीडरशिप में थी वही ब्यूरोक्रेसी और प्रोविंशियल जो जुडिशियल बोर्ड से उसको लीड करते थे ये जब जो इनकी राइट्स एंड प्रिविलेजेस अबॉलिश हुई तो कॉमनर्स को मिडिल क्लास को दी पोर को सबको एक्सेस मिला कि अब हर ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल और फिर टैलेंट और मेरिट के बेस पे आपको हाई ऑफिसेज में एंट्री दी जाएगी जो कि पहले नहीं दी जाती नेपोलियन वाज अ कॉमनर he came into power because of this practice because feudalism was abolished in France if feudalism abolished ना की जाती तो नेपोलियन कभी ताकत नहीं आ सकती could not become the general in France तो लीडरशिप नहीं आ सकता तब कॉमनर्स सिपाही तो रहता but he could not have access towards the leadership कैडर जो कि उसको भी एक्सेस मिला तो ये it was important point in that sense और clergy after clergy they came on diocese और जो उनकी rights and privileges थी उसको renounce करेंगे खत्म करेंगे और जो टैक्स दिया करते थे वो अब खत्म किए जाएंगे and then August के अंदर there will be declaration of rights and citizens इसके ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन आया जिसको इवैल्यूएट करें we covered all already declaration of rights and तो जून में थर्ड स्टेट में आपको नेशनल असेंबली डिक्लेयर करके 20 जून को पेरिस कोड रोज जुलाई ग्रेट फेयर 14 जुलाई बास्टिल इंसिडेंट जुलाई 15 को नेशनल गार्ड अगस्त के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जून जुलाई अगस्त ये जो 3 महीने हैं 3 मंथ्स हैं इसके अंदर काफी चीजें जो मुझे हुई फ्रांस में एंड व्हाट वाज इट वाज लाइक एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह का फ्रांस का था ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड विल रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स so Enlightenment philosophers already were preaching these ideas. All men are born free and equal. And then political rights, national rights, like liberty, property, security. वो कहने के रियासती हक देंगे. Resistance to oppression. अगर हुकूमत oppress कर रही है तो लोग resist कर सकते हैं. John Locke. This is what Lockean philosophy was. अगर oppressive government है तो लोगों को हक है वो हुकूमत के खिलाफ resist कर सकते हैं. Political association का राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया रियासत सेफ गार्ड के डिसीजंस को फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया कि अगर लिबरल्स थिंकर्स से लिबरल फिलॉसफी से पूछा जाए लिबरलिज्म से दैट व्हाई वी क्रिएटेड अ स्टेट व्हाट व्हाई वी क्रिएटेड अ स्टेट लिबरल फिलॉसफी इट्स द पीपल हु क्रिएटेड द स्टेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी It's the people who created the state. What was there before state? State of nature. We covered all these points last time.
तो रियासत के बनने से पहले there was a state of nature. It's the people who came together through their consent created state as a political institution. We covered all these points. So liberals के मुताबिक, it's the people who are source of political power, popular sovereignty. लोग liberals कहते हैं उन्होंने इस institution को create किया लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए. So why we created a state? To protect the fundamental rights of the people, to safeguard the fundamental rights of the people. This is liberal theory. How a state came into existence? To the consent of the people. So it's the people who are source of power. Legal equality would be there, right to high offices on the basis of merit and talent would be there. Freedom of expression, freedom of worship, due process of law को follow किया जाएगा. Concept of liberty, आप कुछ भी, you are free to do anything, लेकिन next person को उससे हार्म नहीं पहुंचना चाहिए. प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे. अगर हुकूमत किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहती है, आपको एक्वायर या कोई एक्विजिशन करना चाहती है, तो इन एडवांस कंपनसेशन देके फिर हुकूमत किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है. एवरीबॉडी हैज राइट टू मेक लॉज, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट टू वोट वुड बी देयर, फ्रेंचाइजमेंट वुड बी देयर. Law reflect करे general will, and the general will is the will of the majority. दूसरा concept of a general will के जो कानून बनाए जाएंगे, जो पॉलिसीज बनाए जाएंगे, वो लोगों की majority के will को reflect करने चाहिए. Real sovereign argument, popular sovereignty. Essence of power is the people, and then through its and government जो है जो हुकूमत है derived its power from the consent of the people. So government comes from below, it's not from above. It's a rejection of a divine right. और अगर हुकूमत पावर अब्यूज कर लिया, वो टेक कर लिया, तो लोग उसके खिलाफ रेजिस्ट करते हैं. जॉन लॉक, हॉब्स हो, रूसो हो, मॉन्टेस्क्यू, अपने हिंदी लाइन्स के ऊपर लिखा. एंड इवेंचुअली ये वर्स में भी आ गया, बादशाह इसको तस्लीम नहीं करेंगे. एंड अगेन पीपल वुड रिवोल्ट अगेंस्ट हिम. एंड ही वाज लिविंग इन वर्साइज. पेरिस के सबर्ब्स में वर्साइज का एक इलाका था, छोटा सा, जहाँ पे बुर्बन जो फैमिली थी, उन्हें वहां एक शानदार किस्म का महल तैयार किया था. ये वहां पे रहा करते थे. जब बादशाह डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजंस को नहीं मानेगा, और रेवोल्यूशनरीज को ये था कि बादशाह ना इनकलाब को ओन कर रहे ना अपोज कर रहे, पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट दैट, और दे विल बी मार्च टुवर्ड्स वर्साइज. पेरिस से वर्साइज की तरफ मूवमेंट होगी, मार्च होगी, एंड देन दे विल ब्रिंग द किंग एंड द क्वीन बैक टू पेरिस. किंग एंड क्वीन को वर्साइज के महल से वापस पेरिस लेके आएंगे. पेरिस के अंदर सेटल किया जाएगा. पेरिस के अंदर एक पुराना महल था, वहां पे उनको रखा जाएगा. उस महल को ट्यूलरीज कहा जाता है. So that is Tuileries one incident. और खवातीन, the women would march towards Versailles. पेरिस से खवातीन मार्च करेंगे, लीड करेंगे. और थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं, अपर क्लास उनकी जो है बूर्जुआ क्लास, वो खवातीन का साथ देंगी. एंड पुअर और मिडिल क्लास वो सब पेरिस से मार्च करेंगे टुवर्ड्स वर्साइज. किंग एंड क्वीन दे विल बी ब्रॉट बैक टू पेरिस. तो पेरिस के अंदर अब उनको पुराना महल था ट्यूलरीज का, जो उनको इतना पसंद नहीं था, यहाँ इनको सेटल किया जाएगा. एंड व्हाई दे quite occurred, why this incident occurred, because again the king refused to accept the declaration of rights of men and citizens. बादशाह इनकलाब वो नहीं कर रहा, वो फोर्सेस कंसंट्रेट कर रहा है, वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने जा रहा है. These viewers were there in France, and eventually मार्च की जाएगी. And there was food shortages हैं कि monarchy ने फूड स्टोर की हुई है वर्साइज के अंदर, and then they thought कि ख़वातीन मार्च करेंगे कि वहाँ से हमें फूड जो वहाँ स्टोर की गई है, तो ढेर सारी फूड will be there available. And they would be, and the king and queen, when they would be brought back to Paris, and they would be raising slogans that we are bringing back the bakers and the baker's wife, and now we have plenty of food. क्योंकि queen ने ये कहा था कि अगर रोटी नहीं है, कि मीट नहीं है, तो ब्रेड खा लो, फ्रेंच ब्रेड कोई थी वो खा लो. So इसको रेडिक्यूल किया गया मैरी एंटोनिएटी को, because she was from the enemy's family, from Austro-Hungary, from Habsburgs. She was from Habsburgs. In French Revolution, के अंदर क्वीन वाज फ्रॉम ऑस्ट्रो-हंगेरियन रूलिंग फैमिली, जो कि इनके एनिमी कंट्री था, दुश्मन मुल्क था. हैब्सबर्ग्स के साथ पॉलिटिकल राइवलरीज थी, बुर्बन्स की. और इसी तरह से रशियन रेवोल्यूशन के अंदर भी जो क्वीन थी वो भी एनिमी कंट्री थी. दैट शी वाज फ्रॉम जर्मनी. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन में एक सिमिलरिटी है कि द क्वीन्स वर फ्रॉम द एनिमी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशियन रेवोल्यूशन वाज देयर, एंड अलेक्जेंड्रा वाज फ्रॉम जर्मनी. उसमें भी क्वीन को टारगेट किया गया, रिडिक्यूल किया गया. फ्रांस के अंदर भी मैरी एंटोनिएटी को टारगेट किया गया, रिडिक्यूल किया गया.
सर दोनों का एक नेगेटिव रोल भी तो था। दोनों का नेगेटिव रोल भी था, दोनों के ऊपर जो है वो इश्यूज हैं, एक्स्ट्रावेगेंस के इश्यूज हैं, particularly in case of Alexandria, illicit relations के वहाँ पे उस मॉन्क रॉस्पुटिन के साथ वो उसके alleged rumors वो भी थे, तो वहाँ पे हालात जो है खराब हुए, so they किसी हद तक इनका रोल भी था, so that is Tuileries one incident when the king and the queen were brought back to Paris from Versailles, और यहाँ से भी किया जाएगा ये वुमेन जो मार्च था, ये वुमेन की सिलेक्शन ये नेचुरल उन्होंने मार्च किया था या उनको जानबूझ के वहाँ पर सिर्फ ख्वातीन को भेजा गया था, ये मार्च ख्वातीन ही करेंगी या दैट वाज वन ऑफ इंसिडेंट्स? नहीं, वन ऑफ दैट इंसिडेंट में सिर्फ टारगेटिंग किया था, क्योंकि वुमेन जो थी इन्होंने रोल प्ले किया रेवोल्यूशन के अंदर, सैलून्स जो थे, जो पॉलिटिकल वो जो क्लब्स थे जहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशंस हुआ करती थी, ये उनको ऑन करती थी और ये उनको रन किया करती थी। तो जो पॉलिटिकल क्लब्स थे फ्रांस के अंदर, जैसे जैकोबिन्स के क्लब्स जो थे फ्रांस के अंदर, क्योंकि उस वक्त सियासी जमातें नहीं हुआ करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट देयर, तो वहाँ क्लब्स हुआ करते थे, जो क्लब्स वर लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, तो जैकोबिन्स क्लब, जेरोनिन क्लब, डिफरेंट फ्रांस के क्लब्स थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी। इन पॉलिटिकल पार्टीज की जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो सैलून्स के अंदर हुआ करती थी। वो जो इंटेलेक्चुअल सेंटर्स थे पॉलिटिकल एक्टिविटी का, जो वो छोटे छोटे एरियाज हुआ करते थे, उनको मेजॉरिटी में वुमेन उनकी ऑनरशिप थी, ख़वातीन उनको चलाया करती थी, वहाँ पे लोग आना, डिस्कशंस करना, वहाँ पॉलिटिकल जो एक्टिविटी थी वहाँ हुआ करती थी, तो पॉलिटिकली दे वर क्वाइट एक्टिव इन फ्रांस एंड दे वुड प्ले अ प्रोमिनेंट रोल, वो इसको लीड करेंगी। फिर हम देखेंगे कि ढेर सारी ख़वातीन जो लिखेंगी ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस के रिएक्शन में ये खातून लिखेंगी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। आई थिंक ओलंपिया डी गॉज थी, वो इसके ऊपर रिएक्ट करेंगी कि हम पूरे रेवोल्यूशन में आपके साथ थी, साथ दिया एंड दिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस, तो वुमेन कहाँ पे है, उनको तो कोई सिटीजनशिप के राइट्स नहीं दिए। तो जो आप लिबरल फेमिनिज्म भी पढ़ते हैं, उसकी जो रूट्स हैं वो भी 1790s फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो बेगिन की जाती है। Married Wollstonecraft भी vindication of women को जिनकी बुक है, she could be writing in that time period, क्योंकि रूसो उनको कोई राइट्स नहीं देता। So that was the reason, particularly नहीं था, but they were quite active politically, तो उनको allow किया गया कि आप lead करें and they bring back the queen and the queen back in Paris। और इन सारी developments के ऊपर जो response था, very weak response of the ruling family या establishment जो वहाँ की थी। थर्ड स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती है, टेनिस कोर्ट, ग्रेट फेयर, बास्टिल इंसिडेंट, ट्यूटरीज वन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस, इन सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर रिस्पांस क्या था? वेरी वीक रिस्पांस होते हैं, जो कुछ वो कह रहे थे वो मानते जा रहे थे, और वो यूज ऑफ फोर्स नहीं था। तो ग्रेजुअली नेशनल असेंबली जो थी वो पावरफुल होती चली जाएगी इन फ्रांस, और दैट इज द रीजन के रिस्पांस था इन सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर, दैट वाज वेरी वीक रिस्पांस। So where was the mobility? मतलब ये these people after king to king तो उनकी सारी डिमांड मांग रहा था, तो वो जो नोबिलिटी जो कि अपोज कर रही थी बेसिकली, तो उसका क्या रोल है? नोबिलिटी मोनार्की को तो अपोज किया, और ये उनकी डिमांड्स की वजह से ईस्ट इंडिया जनरल का सेशन कॉल हो गया। अब जब सेशन कॉल हुआ, थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देती है, तो नोबिलिटी अरिस्टोक्रेसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, और वो बादशाह को परसुएड करेगी कि इस असेंबली को डिसॉल्व कर, बट किंग वुड नॉट लिसन। They would persuade the king to use force against the members of the National Assembly. King would not listen. And then जब वो बादशाह को try करते रहे, वो convince नहीं हुआ, the few members of nobility they would leave France. तो वो फिर इमिग्रीज बनेंगे, फ्रांस को छोड़ के चले जाएंगे, कुछ फ्रांस में रहेंगे जो कहेंगे बादशाह को कि हालात बेहतर किए जाए, रिस्टोर किए जाए। तो nobility would be there. तो फिर ग्रेट फेयर में nobility के खिलाफ थर्ड स्टेट ने रिएक्ट किया। सारा जो टारगेट था अरिस्टोक्रेसी क्लर्जी थी, वो बादशाह फिर भी नहीं था ड्यूरिंग द ग्रेट फेयर एंड बास्टिल इंसिडेंट एंड ऑनवर्ड्स। तो नोबिलिटी को टारगेट किया गया। तो नोबिलिटी विद इन नोबिलिटी का भी एक इशू था ना, जैसे कुछ एलीट क्लर्जी जो थी वो दूसरी क्लर्जी को भी यानी उनको डाउन प्ले करते थे। दे वर आल्सो दे वर आल्सो फेसिंग इश्यूज विद अदर क्लर्जी, क्योंकि जो एलीट थे, जो बादशाह के ज़्यादा थे, इन्होंने जब ये फेयर का जो पीरियड था तो देन दे
abruptly changed their position towards the third step. कुछ ये nobility का एक issue ये भी था कि nobility was not with the king with all the spirit because of this issue. हाँ, क्योंकि ये issue. हाँ, क्योंकि within nobility कुछ पूरा ऐसे nobles कोई clergy को सीधा लेके नहीं, तो उनमें भी कुछ members they switched their alliance from nobility and clergy towards the third estate. तो nobility clergy में से भी कुछ तबका तो थर्ड estate के साथ खड़ा हो गया. कुछ बादशाह को persuade कर रहा है कि आप इनके खिलाफ act करें, national assembly थर्ड estate के खिलाफ. So that was the issue with the nobility. So how they reacted? बस एक मिनट मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ. ये टॉपिक कंप्लीट होगा ब्रेक देगा. सो मैं सारी प्रोसेस कर रहा हूँ. बस कंप्लीट हो गया. हम इसकी हेडिंग से लेते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस किए होंगे. वी हैव कवर्ड ऑल दीस पॉइंट्स. सो पहले इंटेलेक्चुअल रीजंस पे क्या है, फाइनेंशियल रीजंस में क्या. नंबर 1 सब पॉइंट प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंस क्या है. उससे पहले वी हैव टू डिस्कस द फ्रेंच सोसाइटी, हाउ इट्स डिवाइडेड इनटू 3 estates. देन प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंस, प्रॉब्लम ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है. Administrative issues क्या थी, disorder finances was war ने कैसे contribute किया towards the financial mass population explosion, economic downturn. We covered all these points. ठीक है जी. Next ये 3 questions previous years में आए हुए हैं. So we covered these questions. Causes क्या है revolution की, we covered causes. Was it avoidable? Causes and circumstances that eventually led to overthrow of the king. वो point अभी हमने नहीं किया. Overthrow of the king की तरफ अभी हम नहीं गए. We covered that as well. So major causes क्या है, जर्नल से पहले 2 क्वेश्चंस को हम देखेंगे. Major causes, ideas of enlightenment is a major cause. आप इसमें 1-2 पैराग्राफ्स आराम से देखें. And then problem of affluence. If France was prosperous, then how would monarchy can reign? अगर वो prosperous है तो monarchy टूट का शिकार कैसे, breakdown कैसे करेगी, फ्रांस में इनकलाब कैसे आएगा if France was prosperous? The problem of affluence यहाँ पे आपने डिस्कस करना है, जो कि covered already. Fourth is disorder finances, we covered. Administrative malaise, economic downturn, royal pusillanimity, royal weakness क्या थी related to the economic issues, aristocratic revolt, why they revolted, the clash between 2 moving forces, and what were those 2 moving forces, what was the clash between them, and the joint plan game of nobility and clergy, demands of third estate, Aristotle, Bastille incident, declaration of rights of women citizens, Tuileries Fund, and all these developments, a very weak response of the king towards all these developments. This is what we covered. So you can revise how we can take 20 maximum 15 or 15 minutes break. Because then I have to cover everything. It's 15 minutes break after 10 minutes.